फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस RBS फिजिक्स चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बेल आइकन दबाएं और कॉल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही आपको इसके नोटिफिकेशन से मिल जाए। आप अपने सोशल साइट्स पर हमारे वीडियो को शेयर करें। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल साइट्स के लिंक दिए हैं, आप उन्हें फॉलो करें और अपने डाउट्स को दूर करें। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देयर इज चार्ज Q1। एक चार्ज है Q1। ये चार्ज अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, और अगर उस फील्ड में कोई भी दूसरा चार्ज होगा तो उसके ऊपर बल लगेगा। वैसे किसी भी फील्ड में कोई भी वस्तु होती है तो उसमें कार्य करने की क्षमता होती है, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड को हम लें, गुरुत्वीय फील्ड को लें, ये मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है, तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड में भी किसी भी बिंदु पर अगर कोई पार्टिकल हम रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स काम करता है, और जो ये फोर्स काम करता है इसके कारण इसमें काम करने की क्षमता होती है। इफ इट इज मूविंग इट इज डूइंग वर्क। अगर ये मूव नहीं कर रहा है, स्थिर है, तो ये कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन कार्य करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। उसी तरह से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इफ देयर इज ए चार्ज, इट हैज कैपेबिलिटी ऑफ वर्क, यानी पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर होती है। यहाँ पर हमने मान लिया कि एक Q1 चार्ज है जो स्टेशनरी है, और एक Q2 चार्ज है जिसको हम C से B तक लाते हैं। C से B तक लाते हैं। AB इक्वल टू R1, AC इक्वल टू R2। मान लिया Q2 A से R दूरी पर किसी बिंदु P पर रखा है। Q2 is at R। Q1 Q2 पर बल लगाएगा। D force on Q2 due to Q1 is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. This force is in the direction, यानी in direction of AP. In the direction of AP. Because this is positive charge, if it is positive charge, then there is a repulsive force, and due to the repulsion, the force on Q2 is in this direction. Now by an external source, हम एक एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा इस Q2 को Q1 की ओर यानी टुवार्ड्स A हम ले आते हैं। जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस Q1, यानी जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, वी ब्रिंग द चार्ज Q2। अब इसको लाने के लिए जितना फोर्स इसके ऊपर लगता है F, यदि इतना ही फोर्स हम इसके ऊपर लगा दें इक्वल टू F, यानी यदि जितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है F, अगर हमने -F लगाया तो रिजल्टेंट फोर्स तो 0 रहेगा, बट इट विल मूव विदाउट एक्सेलरेशन। देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज देयर इज नो एक्सेलरेशन। तो बिना एक्सेलरेशन के इसको हम मूव कराते हैं, इसलिए उतना ही इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको मूव कराएंगे जितना इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लग रहा था। और इसलिए to displace
Q2 by dr, d work done by external source, एक्सटर्नल एजेंसी। एक एक्सटर्नल एजेंसी जिसको ले आ रही है बाहर से, इलेक्ट्रिक फोर्स तो इसको ठेल रहा है, एन एक्सटर्नल एजेंसी इसको इधर ले आ रही है अगेंस्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाई एक्सटर्नल एजेंसी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, displacement is very small and therefore the work will be very small. This is equal to minus F dr is equal to minus F is equal to this quantity 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon r square into dr. This is the work done to displace this by a very small distance dr. Now the work done to bring it from C to B. Work done to bring from C to B is W. इतना वर्क होगा। इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। दीज आर द कांस्टेंट क्वांटिटीज, इनको बाहर निकाला। Q1 Q2 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 फ्रॉम R2 to R1 1 upon R square dr. This is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 1 अपान आर फ्रॉम R1 to R2 to R1। Therefore W is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 1 upon R1 minus 1 upon R2। This is the work done to bring Q2 from C to B, and this work done is stored in the system of the two charges Q1 and Q2. This work is stored in the system of Q1 and Q2. This is the potential energy of these two charges. This is electrical potential energy
electrical potential energy of the two charges. The potential energy is the work done. As we know that the potential energy is at C in Q, because here electric field and therefore the force is acting on Q2. If there is a force on any charge, it means it has the capability of doing work, and therefore the potential energy is here and the potential energy is here. When Q2 is brought from C to B, the potential energy is increased, and therefore change in potential energy. Change in potential energy delta U is equal to U R1 minus U R2. The potential energy at R1, this distance is R1 AB and this distance is R2. The potential energy at this point is UR1, this is R2. The potential energy at this point is larger than this. इसकी वैल्यू इससे अधिक है और इसलिए इतनी पोटेंशियल एनर्जी में वृद्धि हो जाएगी और वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में. तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस. Three charges of 10 microcoulomb each placed at the vertices of a equilateral triangle. Find the potential energy of the system here. This is placed at the vertex of equilateral triangle of side equilateral triangle of side 10 centimeter. Find potential energy. This is 10 centimeter each. The charges are 10 microcoulomb, 10 microcoulomb, 10 microcoulomb. Distance 10 centimeter, 10 centimeter, and 10 centimeter. Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 is equal to 10 microcoulomb, that is 10 to the power minus 6 coulomb. R1, R2, R3,
is equal to 0.1 meter. Therefore, potential energy U. When we have to find out the potential energy, this is the potential energy when it is displaced from C to B. Potential energy here and here. But when we find the potential at that particular point, we take the point, a reference point. This reference point C is taken as infinity. When reference point C is taken as infinity, and for this we take it R, then the potential energy at B will be equal to here. The change in potential is this. But when this is R and this is infinity, at infinity the potential energy is supposed to be 0. That is the reference point. And then it will be equal to UR, that is 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R, when we compare it from infinity. So therefore potential energy U is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R1. And because Q1, Q2, Q3 are equal, R1, R2, R3 are equal, and they will be add 3 times, that is 1/4 pi epsilon 0 Q1, Q2, Q3 upon R2 plus 1/4 pi epsilon 0 Q3 Q1 upon R3. R U is equal to 1/4 pi epsilon 0 is common to all, and Q1 Q2 Q3 Q1 all are equal, R1 R2 are equal, and therefore this is 3 times 1/4 pi epsilon 0 is 9 into 10 to the power 9. Q1 and Q2 Q3 all are 10 microcoulomb, are 5 microcoulomb, 5 microcoulomb, are 5 microcoulomb. And R1 R2 are 0.10. This is equal to 25 to 25. This is equal to 2 to 5. ये होगा 5 into 3, 15, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 9, 6 or 6, 12, minus 3, पॉइंट हटा तो -2, 10 to the power -2, that is equal to 6.65 joule. This is the potential energy of this system. Here the electric potential energy of the system of two charges. The system of these two charges, and these two
charges. Electric potential in any electric field. Electric potential now we know that there is a point which is known as infinity. Suppose there is a electric field, this is infinity. Infinity means where the electric field is zero, and also the potential is zero. That is, the potential is also zero. Potential. And therefore, when we bring any charge from here to in the electric field, we have to work. There is a point A. If we bring a unit positive test charge from infinity to this point, the work done is equal to the potential of this point. Then electric potential of any point in an electric field is the work done to bring the unit positive test charge from infinity to that point. Because at infinity the potential is zero. Therefore, we take this infinity as reference point. इसलिए we compare from here to here. तो the work done to bring unit positive test charge from infinity to the point in the field, in the electric field. Suppose we bring the charge Q naught from here to here and work is done W. Then potential at A. Therefore, potential V is equal to W upon Q naught. This is joule. This is coulomb. Joule per coulomb. And joule per coulomb is called volt. Joule per coulomb is volt. So this is the electric potential. The electric potential is work done to bring the unit positive test charge from infinity to that point. Now we have to calculate the potential at any point due to any point charge, because this electric field have been produced by any charge. जिस चार्ज ने इसको पैदा किया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, उस चार्ज का पता हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना यहाँ पर पोटेंशियल होगा. तो द पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, द पोटेंशियल electric potential due to a point charge.
Point charge means a small charge. Let the point charge be Q, placed at this point Q. We have to find the potential at point P at separation R. We have to find out potential here. Let us suppose that a test charge Q naught is placed at distance x from Q. This is Q naught test charge from at distance x from Q. test charge को हमने इससे x दूरी पर रखा. Therefore, the force on Q naught, the force on Q naught is 1/4 pi epsilon 0 Q naught upon R square. In this direction, that is, if this is A and this is B या P, then in direction of AP की दिशा में फोर्स काम करेगा. Now by an external agency हम इस चार्ज को ले आते हैं from this distance towards A या towards Q by a small distance dr से या dx work done to bring Q naught against electric force. Work done to bring Q naught against electric force. dW is equal to माइनस अगेंस्ट यानी पीछे ले आएंगे नेगेटिव एफ इंटू डिस्टेंस डी एक्स. दिस इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q naught upon x square dx, and therefore work done to bring Q naught from infinity to this point P, because we have to find out the potential at P. Work done to bring Q naught from infinity to P. W इसी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं. फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, द डिस्टेंस ऑफ P इज R. माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q naught upon R square, sorry, Q naught upon x square. X square, yeah, distance is x, we have taken x. R
W is equal to Q naught upon 4 pi epsilon 0 minus 1 upon x square dx infinity to r. This is equal to Q naught upon 4 pi epsilon 0, and the integration comes out to be 1 by x from infinity to r, and this is equal to Q naught upon 4 pi epsilon 0, 4 pi epsilon 0, 1 upon x की जगह 1 upon r, and then 1 upon infinity, which vanishes 1 upon r. और इसलिए पोटेंशियल एट डिस्टेंस r, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट r is V is equal to W upon Q naught. It is the work done to bring the unit positive test charge. इससे भाग दे दिया तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले आने में होने वाला कार्य. दिस इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R volt. This is the potential at any distance r from Q. Potential due to a point charge. D the radius of gold nucleus is 6.6 Fermi. Find the potential at the surface of gold nucleus. Z is equal to 79. Now Z means the number of protons. Therefore the charge Q is equal to ZE 79 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is the charge Q on the gold nucleus, and R is equal to 6.6 Fermi, means 10 to the power minus 15 meter, and therefore potential V is equal to
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, that is 9 into 10 to the power 9 Q. Q means 79, 1.6, 10 to the power minus 19. R 6.6 into 10 to the power minus 15. This is equal to 3 से इसको काट देंगे, 3.3, 2.2 and this is 3. 2 से कट जाएगा 1.1, ये आ जाएगा 0.8. इनका मल्टीप्लाई किया 79 multiplied by 8, .8 into 79, then 3, 6, 189.6 divided by 11. Eleven, 7, 9, 7, 2, 6, this is 1, 7, 2.3, and again this is 10 to the power 9, this is 10 to the power minus 19, 10 to the power 15. ये हो गया यहाँ पर -4, 15 में से ये 19 से निकल गया 15, तो यहाँ -4 बचा और 4 यहाँ 10 to the power 9, 10 to the power 9 इसमें 4 कट गया तो 10 to the power 5. (10 to the power 5). So this is equal to 1.7372 into 10 to the power 7 volt. This is the potential at the gold nucleus. ये हो गया हमारा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसे लाइक करना न भूलें, शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।